हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्निपेट। सो आज मैं आप लोगों के लिए ये वाली मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ और ये लुक आप कोई भी रिचुअल्स पे कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने रक्षाबंधन के लिए ये मेकअप लुक किया है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ऑफलाइन आईब्रोज़ को फिल कर लिया है। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र को लेके फेस पे अप्लाई कर लूँगी और अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्किन पे ये रहने दूंगी ताकि अपने आप ये सेट हो जाए। There's not much to do when all I can is thinking about you, not doing well, don't know where you are. उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ये स्विस ब्यूटी का रियल बेस प्राइमर। थोड़ा सा लूँगी मैं यहाँ पे और अपनी स्किन पे अप्लाई करूँगी अच्छी तरह से। ये काइंड ऑफ शिमरी शेड है तो इसलिए मैंने यहाँ पे एकदम थोड़ा सा लिया है और इसका शेड नंबर है नंबर 2। अभी प्राइमर यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ये LA गर्ल प्रो कॉन्सीलर, क्योंकि मेरे स्किन पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, जैसे आँखों के नीचे, नोज़ के एरिया, लिप के एरिया पे, तो वही मैं अप्लाई करूँगी। और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करूँगी और हमेशा डैप डैप मोशन पे ही अप्लाई करना, कभी भी ड्रैग मत करना, क्योंकि ड्रैग करने से क्या होता है ना कि जो भी कॉन्सीलर या फाउंडेशन हम यूज़ करते हैं वो वहाँ से हट जाता है और आपको वो कवरेज नहीं मिलेगा। ऑलवेज हल्के हाथों से डैप डैप करना है। मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ और इसका शेड नंबर है 02। Down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you. इसके बाद मैं अप्लाई कर लूँगी फाउंडेशन और मैं यहाँ पे 2 फाउंडेशन यूज़ करूँगी। एक है वेट एंड वाइट फोटो फोकस फाउंडेशन, शेड नंबर टॉफ़ी पेकान और फिट मी का 310 सन बेज, और दोनों को एकदम लिटिल अमाउंट पे लेके अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। फिर से एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here, it's been way too long. If I could lay down beside you, I would, when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you. और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का रिवाइंड कंसीलर और आई थिंक इसका शेड नंबर है 144 कैरामल। फिर से वही ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लूँगी।
that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, और ये हो जाने के बाद मैं सेट कर लूँगी पैक का ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ। if I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. और कंट्रोल के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है शिवाना कलर पैलेट से ये ब्राउन शेड को, और एक आई शेडो ब्रश की मदद से मैं फेस को कंट्रोल कर लूँगी। There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been और अभी मैं एक हिलरी रोडा आई शेडो पैलेट से ये पिंकी शेड को लेकर मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई कर लूँगी। nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. I would. आई शेडो के लिए मैं ये हिलरी रोडा का पैलेट यूज़ करूँगी। इस पैलेट से मैं ये शेड को लेके अपने क्रीज एरिया के ऊपर अप्लाई करूँगी, साथ ही साथ आउटर वे भी कर लूँगी। And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. और सेम पैलेट से मैं ये ऑरेंज शेड को लेके, ये थोड़ा सा शिमरी है, मैं लेके अपने आई बॉल के ऊपर ये प्रेस कर लूँगी। Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. You're all I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कोलोसल काजल। If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. और मैं सेम पैलेट से वही शेड को लेके मैं अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। और अभी मैं मेरे फेस में जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो मैं डस्ट आउट कर लूँगी ताकि फेस नेचुरल लगे। There's not much to do.
और यहाँ पे मैं लाइनर के लिए यूज़ किया है मेबेलिन का कोलोसल बोल्ड लाइनर। That you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can let... और यहाँ पे मैं फेस को सेट करने के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, और मैं पूरे फेस पे ये अप्लाई कर लूँगी। That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know. और यहाँ पे मैं मस्कारा के लिए यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का कोलोसल काजल मस्कारा। I will remember you're all I know, what I need, and that ain't changing. If I can lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. और लिपस्टिक के लिए मैंने आज यूज़ किया है ये मार्स का ब्राउन शेड, और इसका शेड नंबर है 10। That's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would, I would, I would. सो मेरा मेकअप पूरा हो गया है और नाउ आई एम रेडी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना। आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन।